Hello बच्चों, let us read the question. Statement 1. If a body moves in a straight line in one direction, then the average speed of the body over a given time interval of time is equal to the average velocity of the body in the same interval of time. Statement 2. When a body moves without change of direction, the distance traveled by the body is equal to the displacement of the body. Option A, both statement 1 and statement 2 are correct. Option B, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option C, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option D, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है key concept of this question: motion in one dimension or in a straight line. Motion in one dimension or motion in a straight line. So when a particle or when an object is moving in a straight line, it will have only two directions of motion. तो वो दो डायरेक्शन है. अगर हम मोशन को एक्स एक्सिस पे हो रहा है कि समझेंगे, so the object or particle can move only in the positive x direction or negative x direction. When a particle moves in a single direction, it can either move in the positive direction or नेगेटिव डायरेक्शन. तो अगर हम एक्स एक्सिस को वो डायरेक्शन समझेंगे, लेट अस से दैट द पार्टिकल is moving along the x-axis, then the particle will move either in the positive or negative x direction. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, स्पीड और वेलोसिटी का मतलब या डेफिनेशन को समझेंगे. सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड ये है द टोटल amount of length covered by a particle in its or in the entire duration of motion. Displacement तो अगर पार्टिकल पॉइंट A to पॉइंट B to पॉइंट C and back to पॉइंट A हो रहा है, तो the distance traveled between
तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. द लेंथ covered between the initial and final position is under the duration of motion is displacement. तो इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. तो यहाँ पे मैं 3 पॉइंट्स लूँगी, A, B and C. Say the distance between A and B is x1, B and C is x2. अगर एक पार्टिकल A to B, B to C और फिर C to A वापस आ रहा है, तो the total distance will be x1, x2, फिर से x2 और x1, ताकि the total distance will be whatever is the length covered by the object in the entire duration of travel. Whereas displacement, it's starting from point A and coming back to point A. मतलब हम वेक्टर नोटेशन में ये समझ सकते हैं कि पार्टिकल पॉइंट A से हिला ही नहीं, तो इस केस में the displacement will be 0. If the particle does not change direction, जैसे कि इस एग्जाम्पल में वो डायरेक्शन चेंज करके वापस A पे आ रहा है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो पार्टिकल डज नॉट चेंज डायरेक्शन, देन distance traveled is equal to displacement. अभी हम स्पीड और वेलोसिटी के डेफिनेशंस को देखेंगे. स्पीड is defined as total distance traveled total distance traveled divided by time interval. और वेलोसिटी का डेफिनेशन है, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज displacement divided by time interval. अगर एक पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज किए बगैर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच रहा है, then the average speed and average velocity will be the same. So if a particle moves in one dimension without changing its direction, then
average speed is equal to average velocity. तो अभी हम दोनों स्टेटमेंट्स को फिर से देखेंगे क्वेश्चन में. So statement 1, if a body moves in a straight line in one direction, then the average speed of the body over a given interval of time is equal to the average velocity of the body in the same interval of time. तो ये statement true है. When a body moves without change of direction, the distance traveled by the body is equal to the displacement of the body. ये statement भी true है. Therefore, the correct option to this question is option A. Both statement 1 and statement 2 are correct. Hope you have understood it well. Best of luck.